household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved. 9.6 crore LPG connections under Ujjwala. 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons. 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts. Insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amrit Kal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of the scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth.
We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits
and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas.
Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff
for the 740 Ekalavya model residential schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways.
This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an urban infrastructure development fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, centre, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of
Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, video
KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a Green Credit Program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources
for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme, 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio-input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Man Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and
old state ambulances. Honourable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honourable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honourable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023
through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honourable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honourable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honourable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value.
Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So, budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26.
To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honourable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavour for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A,
in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Custom duties on door or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honourable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavour of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers
for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honourable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the Finance Bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class.
The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these,
I'm also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. What is Consolidated Fund? The Consolidated Fund is made up of all revenues and loans raised by the government. It also includes receipts from recoveries of loans granted by it. All government expenses are paid out of Consolidated Fund. No amount can be withdrawn without Parliament's approval.
संसद की प्रक्रिया। हमारी संसद की इस कड़ी में आज चर्चा उन प्रक्रियाओं की जिन्हें आप बार बार सुनते हैं। आज बड़ी ही आसान भाषा में हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्थगन, एडजर्नमेंट। स्थगन एक निश्चित समय के सदन की कार्यवाही को निलंबित कर देता है, जो घंटे, दिन या सप्ताह का हो सकता है, लेकिन वो तय होता है। सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। सदन की कार्यवाही आज दिनांक 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिने दिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए संसद की कार्यवाही को समाप्त करना। दूसरे शब्दों में, जब सदन कार्यवाही की दोबारा बैठक के लिए कोई दिन या समय सुनिश्चित न हो, उसे ही अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। Namaskar viewers, hello and welcome to this special coverage on Sansad TV of the Union Budget 2023-24 presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman just a short while ago in Parliament. The first budget of the Amrit Kal, Finance Minister Nirmala Sitharaman's fifth consecutive budget and also the last full budget of the Modi 2.0 government before the 2024 general elections. The key points very quickly. The Finance Minister said the Indian economy is on the right track, heading towards a bright future. The government's focus on reforms has helped the Indian economy stay resilient despite the global headwinds. Now, as a bright spot in the global gloom, India is poised for higher growth in the years to come. So, for this bright future, the Finance Minister laid the roadmap for future growth, and she outlined 7 priorities for the first budget in the Amrit Kal: inclusive development, reaching the last mile; infra and investment, also unleashing the huge potential of India; green growth, youth power, and certain reforms in the financial sector as well, Harsh. So we'll discuss all of these priority areas that Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced, and also some tax reliefs that she just announced in the second part of her speech. So with an eminent panel of experts today, we will decode all of these post-budget analysis, the announcements that the Finance Minister has made, Harsh. जी बिल्कुल टीना, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो 7 प्रायोरिटीज निर्मला सीतारमन ने आज अपने बजट प्रपोजल्स में रखे हैं, ये 7 प्रायोरिटीज बिल्कुल उस सप्त ऋषि की तरह काम करेंगे। जैसे आकाश में हम देखते हैं कि सप्त ऋषि है और वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, और वो ये सारी चीजें का जो विकास होगा वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि ये 7 प्रायोरिटीज क्या क्या हैं जिनका जिक्र आपने किया। लेकिन अभी हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं AKB, जिन्हें हम कहते हैं, AK भट्टाचार्य साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, और आम आदमी को कहें कि जिस चीज का बड़ी ही बेसब्री से किसी भी बजट में इंतजार रहता है, खासकर हम कहते हैं वेतन भोगियों के लिए, कान लगाकर सुनते रहते हैं। और वित्त मंत्री के पार्ट बी में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की चर्चा करते हैं, उसमें उन्होंने ये तोहफा दे ही दिया है कि 7 लाख तक की अगर आपकी आय है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जो 7 लाख का जो तोहफा है वो तो जरूर है, पर उसके साथ मैं समझता हूं कि सुधार की दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो सुधार की दृष्टिकोण से टैक्स व्यवस्था में जो पर्सनल इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिजीम का जो सुधार का जो उन्होंने ऐलान किया है, मैं उसकी सराहना करता हूं। क्योंकि जो 2020 में जो एक ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम जिसमें कोई एग्जेम्पशंस की कोई न्यू टैक्स रिजीम जिसे हम कहते हैं, न्यू टैक्स रिजीम में कि जो लोगों ने उसको ज्यादा सराहना नहीं, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत एक्सेप्टेंस कम था। तो मैं ये समझता हूं कि आज की जो ऐलान किया गया है वो एक ऐसा एक अनाउंसमेंट है जिससे कि लोग अब ये नए टैक्स रिजीम में आ सकते हैं, थोड़ी दिलचस्पी दिखाएंगे। और वित्त मंत्री का भी कहना है कि ये डिफॉल्ट रिजीम बन गया है अब।
तो सरकार का भी इसमें पूरी तरह से उसका सपोर्ट है। पर अगर मैं इस बजट में ऑब्वियसली इसकी जो हेडलाइन जो होंगी आम आदमी के लिए, ये जिसकी आपने जिक्र की, पर मैं ये समझता हूं कि जो इस बजट को अगर हमें पूरी तरह से उसको समझना है, इसकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी है उसको हमें समझना पड़ेगा। और वो मैक्रो इकोनॉमिक फिलोसॉफी मैं समझता हूं कि एक तरफ है वित्तीय अनुशासन, दूसरी तरफ है टैक्स रेजीम का सुधार, और तीसरा और ये है कि उस वित्तीय अनुशासन के अंदर रहते हुए भी जो कैपेक्स में जो 33% का जो इजाफा जो ऐलान किया गया है, मैं समझता हूं ये तीन चीज जो है हमें एक साथ देखना पड़ेगा। और चौथी चीज जो है आपने जो कहा कि जो टैक्स रिलीफ का है, तो चारों जो स्तंभ जो हैं इस बजट के, उसको हमें पूरी तरह से समझना होगा और पूरी तरह से इसका ऐलान कर, मतलब पूरी तरह से इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बात मैं कह दूं कि जो टैक्स कलेक्शंस की जो प्रोजेक्शंस की गई हैं, वो सिर्फ 11-11.5% वृद्धि की कही गई है। तो मैं समझता हूं एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है। तो जो निर्मला सीतारमण जी का जो बजट पिछले 2 साल का बजट हमने देखा है, उस बजट में जो एक अंडर प्रॉमिस और ओवर डिलीवरी का जो एक समन्वय था, वो अभी भी बरकरार है। मैं समझता हूं आमतौर पे ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी ना कि आमतौर पे प्रोजेक्शन बहुत ऊपर होता है और एक्चुअल जब डिलीवरी होती थी तो बहुत नीचे होती थी। हमने 2014 से पहले में उसी तरह से उन्होंने जो वित्तीय जो घाटा का जो ऐलान किया इस साल का, उन्होंने 6.4% का ही दिखाया है उन्होंने। जी बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो इजीली वो उन्होंने जो खर्चे की जो उसके ऊपर जो रोक लगाई है और कैपेक्स को तभी बढ़ाया है उन्होंने। मैं समझता हूं ये एक प्रैग्मेटिज्म है। और स्टेट्स को उन्होंने इस बार मैं समझता हूं कि और भी थोड़ी बहुत छूट दी है। सरचार्ज की घटाना स्टेट को भागीदार बनाए। हाँ, स्टेट्स को उतना नुकसान नहीं होगा। ये नुकसान जो होगा सरचार्ज को घटाने से, जो एकदम जो हाई एंड जो HNI इंडिविजुअल जो हैं उनका 42.7 से 39% में ले जाना, ये अपने सेंटर ने अपना हिट लिया है। ये तो स्टेट्स को उतना हिट नहीं होगा। अशोक, इसको माइक्रो लेवल पे हम डिस्कस करेंगे टीना, लेकिन इन्होंने जो अशोक ने खास बात बताई वो ये है, अगर हम देखें जो 7 सप्तऋषियों की बात आप कह रही थी, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, क्योंकि निर्मला जी ने एक बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अमृतकाल का पहला बजट है, पहली सीढ़ी है। हमें अगले 25 साल जाना है, जब भारत 2047 में आजाद भारत 100 वर्ष का हो जाएगा, उसकी प्रथम सीढ़ी है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, कैपेक्स जिसे हम कहते हैं, वो 33% उसमें इजाफा दिया गया है। 10 लाख करोड़ से बढ़ाते हुए अब इसे 13.7 लाख करोड़ किया गया है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि न सिर्फ इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो सरकार की अभी प्राथमिकताओं में एक है, बल्कि हर दिशा में विकास होगा। और जो सरकार का कहना है कि समावेशी विकास हो और हम अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उम्मीद कर रहे थे कि ये बढ़ेगा। We'll continue, and Mr. Bhattacharya, I'll come back to you. But in the meanwhile, let me also introduce another guest who's joining us in the studio, Professor Charan Singh, CEO, IGROW Foundation. Before we proceed and discuss, analyze each of these aspects, the 7 key priorities that the finance minister had laid across, Professor, your first remarks on the budget. Do you see the finance minister building up on the reforms that this government has, done over the years? Or it's a more forward-looking, capitalizing and sort of, laying a roadmap for India at 100? Absolutely. It's an excellent budget. This is amazing how she has achieved it. The first and foremost thing, as I look as an economic professor, is growth. And this is growth-oriented. And that is reflecting from her figures directly. If the gross fiscal deficit is coming down from 6.4% to 5.9%, it is obvious that there is tax collection is high, tax buoyancy is there, and growth is being recorded. If I look at the sectoral analysis that she has presented today, she has taken care of the employment, she has taken care of women, female labor force participation in the country is very low. She is using the self-help groups to increase that, increase entrepreneurship amongst the women.
She has taken care of the youth. She has spoken about the startups. I think this is an amazing budget. And the most important thing when you talk about growth-oriented budget is the tax slabs. And she has taken care of the personal income tax too. So my first reaction is this is a budget which will take care of the industry because of infrastructure. It will take care of individuals, entrepreneurship because the tax slabs are low now. She has given concessions even to the senior citizens. So that means the banking sector will also benefit. In any growth model, they'll tell you two things, finance and employment. On the finance, she has again spoken about the financial sector. India, as it is a very stable financial stability is very high. But she has spoken about the financial sector and she says they're going to revisit the banking and the non-banking and the RBI Act and look at how they can strengthen the financial system. So to me, my overall reaction would be this budget gets 11 out of 10. Okay, Professor, the fact that, when we talk about inclusive growth and the prominent role going forth of women and youth particularly. So what are the new initiatives that the finance minister has sort of, laid out to increase the participation of not just more and more women, but also to capitalize on the advantage of demographic dividend for India? Yeah, exactly. The startup incentives that she's given, even in the tax slabs that she has said that if you're doing entrepreneurship, I'm going to enhance from 7 to 10 years. There's a tax benefit there. I think that's amazing. Now, quite a bit of youth get employed, self-employment. And on the self-employment too, she has given concessions there. On MSMEs, she is announcing concessions. So this is where I think the youth is going to get engaged actively into the whole system. There has been emphasis on digital thing. And please remember, the youth are far more comfortable with the digital world. And therein also I see lots of things happening there. On the skilling, again, she has emphasized a lot on how skilling is going to get enhanced across the spectrum. I think that is going to help again the youth. So to me, female labor force participation and the youth, which taps the demographic dividend of the country, is rightly placed by the FM. बिल्कुल। और अशोक, हम आगे बढ़ते हैं, इस पे थोड़ी सी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आते हैं। बहुत ही सही तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट को भी टैकल करने की बात वित्त मंत्री ने अपने इस बजट में कही है, जिससे कि ना आपका ग्रोथ अफेक्टेड हो, ना बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन पे असर पड़े, और सारी चीजों को एक तरीके से हम बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर हम देख रहे हैं। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट की जो आपने बात की, जो उसमें हमने ये देखा है कि जो फिस्कल कंजर्वेटिज्म जो है उसका पूरा हमें एहसास मिला है कि 6.4% कहा गया, तो 6.4% में रुकेंगे हम, और अगले साल में तो 4.5% को देखते हुए, और पार्लियामेंट की सदन के पटल में उन्होंने पूरा एक ऐलान किया है कि वो 4.5% के ऊपर वो पूरी तरह से वो कमिटेड है। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐलान है, और उन्होंने स्टेट्स को भी उसी तरह से एक एश्योरेंस दिया है कि आप भी अपना खर्चा बढ़ाइए। 0.5% जो आपकी जो फिस्कल डेफिसिट की टारगेट है 3.5%, वो लिंक्ड रहेगी जिस तरह से आप पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करते हैं। तो ये सारे जो रिफॉर्म लिंक्ड जो एलोकेशंस जो हैं स्टेट्स के लिए, ये मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा एक इंडिकेशन है। और हम कहना चाहेंगे कि आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर अब 5 कर दी गई है। इसे और सुविधाजनक बनाया गया है। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स। अगर आपकी कमाई 6 लाख से 9 लाख रुपए के बीच है तो आपको 10% की दर से टैक्स देना होगा। 9 लाख से 12 लाख की आमदनी पर 15% टैक्स, और 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स, और 15 लाख से अगर ज्यादा आपकी आमदनी है तो उस पर 30% टैक्स देना होगा। इसे लगातार हम अपने ग्राफिक्स के माध्यम से भी देख रहे हैं।
और ये टैक्स स्लैब को 6 से 5 भी किया गया है। एक तरीके से मैं देख रहा हूं डॉक्टर चरण सिंह कि हर तरीके से ईज ऑफ डूइंग थिंग्स की एक व्यवस्था की जा रही है। आप देखें कि टैक्स फॉर्म को भी बदला गया है, जो एक बहुत झंझट लगता था, कितने क्लिक्स दबाएं, कहां जाएं, कैसे जाएं। अब वो सारी चीजें, ये भारत के लिए न सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, बल्कि ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग हो रहा है। बिल्कुल हर्ष, बट इससे पहले कि प्रोफेसर इस सवाल का जवाब दे, एक बार सुन लेते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में एग्जैक्टली क्या कहा, ताकि वो दर्शक जिन्होंने बजट प्रेजेंटेशन मिस कर दिया हो, आइए सुनते हैं कि उन्होंने टैक्स रिलीफ किस तरह से दिया है और जिसका सीधा फायदा हजारों, इनफैक्ट लाखों मिडिल क्लास फैमिलीज को होगा जो कई वर्षों से इसका इंतजार कर रहे थे। आइए सुनते हैं। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. Yes, Professor. One thing is very clear. Firstly, the slabs have been reduced. That makes life easier. Secondly, the tax rates have become multiples of 5 and 10. Very, very easy to compute. Yes. Some of us have been arguing this for a very long time. Direct taxes, indirect taxes, GST. Why can't you think in terms of the last man in the village shop? And he knows, okay, 5%, 10%, 15, 20, and my job is done. So, firstly, the slabs getting reduced, the multiples of 5 and 10 coming in, very easy to understand. If you have noticed, even on the presumptive tax, she has done a great job. So, to a great extent, now MSMEs and professionals don't have to worry about the tax slab at all. Presumptive tax देने से सबको लाभ हो गया। तो मुझे लगता है कि जो अच्छा उसके ऊपर द पीक टैक्स रेट जो 42.5% था उसको रिड्यूस किया एंड 37 से 25% किया, उससे भी अगेन अ मल्टीपल ऑफ 5। तो मुझे लग रहा है कि जो आपने ठीक कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज ऑफ डूइंग एवरीथिंग। तो जो टैक्स से एक डर लगता था कि कैसे कैलकुलेट करना है, कितना होगा, किस परसेंट, वो सब नहीं रहा। सीधा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर ये मेरी इनकम है 5% या 10% या 15% से उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इकोनॉमिक्स में एक लेफर कर्व का कॉन्सेप्ट होता है। आमतौर पर लोग डरते हैं कि अगर टैक्स रेट कम हो गया तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, पर यहां पर वो बात नहीं हो रही है। टैक्स रेट सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा लोग आ जाते हैं, टैक्स देते हैं, टोटल रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादातर आगे ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है इस टाइम पे सरकार ने यही चीज मन में रखी है कि टैक्स स्लैब्स को कम करके सिंप्लीफाई करके। वैसे वित्त मंत्री जी ने उस टाइम पे ये भी बीच में अपनी भाषण स्पीच में कहा कि किस तरीके से हम लोग 90 डेज से 16 डेज तक ले आए हैं प्रोसेसिंग, और कुछ तो हम लोग विद इन 24 आवर्स कर देते हैं। तो उससे टैक्स पेयर को भी एक विश्वास बन जाता है विद इन अ शॉर्ट टाइम। अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं रहती है। मैंने खुद कैलकुलेट किया है और अभी मुझे 24 घंटों में या कम से कम 15 दिन में पता लग जाएगा कि मेरा टैक्स सबमिशन ठीक रहा है कि नहीं। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन जनरल I think has been simplified. Okay, a related question, Mr. Bhattacharya, I'll take from you, because now the new tax regime becomes the default system. Is it still possible to avail the benefits of the old tax regime? Has the finance minister made that clear also? The indication that I got from the finance, we have to look into the finance bill to get a clear answer. But the indication is that the government will treat the new tax regime as the default regime, but the old regime does not go away. But if you compare the tax rates and the slabs under the new regime,
you will see that every income slab has got a benefit under the alternative tax regime. So there will be natural migration of people from the exemptions regime to the non-exemption regime. So I think it has been very carefully drafted. The flaws in the original scheme of 2020 has been addressed very largely, and as the finance minister rightly said, that if somebody is drawing an annual income, taxable income of 9 lakh, earlier system, that person would have had to pay a tax of around 60,000 in a year. Now, 45,000. Similarly, in the case of 12 to 15, anybody who's earning 15 lakh, he or she had to pay around 1.5 lakh, but now it is only 1.07 lakh. So the gains are there. So there will be natural, attraction and migration to the scheme. So I see this also very intelligently done, because you are trying to make the scheme more attractive for those who are at the lower end of the spectrum, in the income spectrum. Now, there are two reasons why I call it intelligent. One is that the government's revenue hit will be relatively less, because as you know, that almost 70% of the government's individual income tax collections are coming from the top 30%. Right. Yes. And so the lower one is more. So the government's revenue hits less relatively. And second, this is the segment. This is the segment which was worst hit during the pandemic and things. So therefore, this also can be treated as a kind of a demand push and a kind of a fiscal stimulus of sorts, so that the people will have at least 45,000 rupees extra in a year, and that can hopefully will help revive demand in an economy that really needs demand push. Sure. And I have no doubts that the new regime will now become the default regime for everyone, because it's so easy to do. और अब चलते हैं अपने संवाददाता नव विक्रम सिंह के पास. नव विक्रम सिंह सुबह से ही संसद भवन में और वित्त मंत्रालय में बजट को फॉलो कर रहे हैं. नव विक्रम. यस, नव विक्रम. आपसे तो पहले आप जानते हैं कि बिहार से सांसद हैं, और इस समय एग्रीकल्चर को लेकर मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर को लेकर जो तमाम सरकार ने जो योजनाएं बताई हैं, जो खाका खींचा है, उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये वर्तमान बजट के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं. देश के किसानों की तरफ से, गरीबों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, बेरोजगारों की तरफ से, मध्यम वर्ग परिवारों को तरफ से, नौकरी करने वालों की तरफ से, और खासतौर पे कृषि की जब आपने बात कही, तो सचमुच में ये पिछला 3 साल का जो कोरोना काल था, पूरी दुनिया नष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था. आज हम लोग भी कष्ट में थे, मगर उसके बावजूद अगर देश को संभाला है और लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, तो वही और नहीं अन्नदाता किसानी है, कृषक ही है. उसके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया है, अद्भुत है. और किसानों के हित के लिए, मछुआरों के हित के लिए, पशुपालकों के हित के लिए कई कार्यक्रम जो पहले से चल रहा था, उसमें जान देने का काम किया है, उसमें और मजबूती प्रदान करने का काम किया. विपक्ष का जो कहना है कि बजट एक तरह से जो पुरानी योजनाएं हैं उसी को बढ़ाया गया, विपक्ष आपके इस तर्क से सहमत नहीं है? देखिए, मैं विपक्ष को तो कभी हम लोग सहमत नहीं करवा सकते, क्योंकि विपक्ष का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है. हर चीज में उनको नकारात्मक चीज समझ में आता है. ये बात सही है कि हमारा जो योजना है, पिछले 9 सालों से हमारी सरकार काम कर रही है, 8 साल से 9 साल से काम कर रही है. प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उनका विजन है, उसी के वजह से देश आज इस स्थिति में है कि दुनिया के नेतृत्व करने योग्य हो गया है. और दुनिया के कई देशों की व्यवस्था, बड़े बड़े देशों की व्यवस्था खराब हो गई, और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारी इसी विजन के कारण, पुराने नए कार्यक्रमों की वजह से देश जहां तरक्की कर रहा है, जहां हमारी अर्थव्यवस्था
दुनिया में 5वें स्थान पर प्राप्त कर ली है। आने वाले दिन में ही इसको हम और आगे ले जाने का कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं समझता हूं कि ये बजट बहुत ही सकारात्मक है, देश हित के लिए है और सबके हित के लिए है। कोई वर्ग, कोई तबका नहीं है जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने नहीं सोचा। और खासतौर पर जो मध्यम वर्ग है जिसके आशा लगाए बहुत पहले से थे, 5 लाख तक का जो स्लैब था बढ़कर 7 लाख हो गया। अब 7 लाख रुपए तक कमाई करिए और कोई टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं हर्ष जी, जो रामकृपाल जी ने बताया कि ये खास तौर पर जो मध्यम वर्गीय लोग हैं और खास वो लोग जो लोग की अभी टैक्स के दायरे को लेकर खास तौर पर नजर थी, उनके लिए बेहतर है, साथ ही कृषि के क्षेत्र के लिए बेहतर है। अगर आपका कोई सवाल हो तो बताइए। नहीं, बहुत शानदार नवक्रम आपने रामकृपाल यादव जी के साथ कृषि और आम जनता का ये किस तरीके से बजट है, बहुत शानदार चीज करी। In fact, we will continue to take comments from the panelists who are sitting with us on the agriculture also. But in the meanwhile, another guest, Mr. Sachin Kumar Sharma, who's working as associate professor at the Center for WTO IIFT, is also joining us. Professor Sharma, delighted to have you with us on Sunset TV. Your first comments on the budget. The BJP MP you just heard described it as forward-looking, inclusive growth. How would you describe the union budget for 2023-24? Yeah, thank you. This is excellent budget, and how to effectively implement Sabka Saath Sabka Vikas, and especially with the agriculture, the government has focused on many things. Especially the one of the important thing is the infrastructure, because that is the most important thing. And if you see the if you see the progress from the past sport program schemes, there are excellent programs were implemented by the government of India and the PM Kisan, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. These type of programs have helped in increasing the income of the farmers. The one important aspect for the farmer income and for the welfare is that it is well known that many of the farmers in India, farmers are small and marginal farmers with land holding size very, very low. Now these farmers, they face multiple challenges in terms of the credit, in terms of lower land holding size. Right. So keeping in this mind, the budget has given the sufficient funds and also implement various specific programs to increase the income of the farmers. Like if you see for the cotton farmers, they have implemented a very good scheme. Then for the fisheries sector, as well as agriculture infrastructure fund, which is playing very important role, and encouraging new young people to come to the agriculture through by bringing new technology in the agriculture sector. These are helping a lot. And furthermore, the fund which is also allocated to Ministry of Corporation, like in the previous budgets, the government has initiated the Farmer Producer Organization, FPO. Now, one of the challenges for the small farmers is that they used to buy inputs from the retail and they used to also sell in the wholesale market. Now, with the FPO, with this collective bargaining, they can buy in bulk so that their input cost will reduce and they will able to bargain better and can sell their products in the domestic as well as the international market. And that's how, if you see that lot of FPO and many of the farmers are now exporting their agriculture products. Right. Mr. Pradeep Goyal, his chairman, Asset Reconstruction Council of the ASSOCHAM, is also joining us on the program. Mr. Goyal, thank you very much for joining us on Sunset TV. Your first response to the union budget? कोई बात नहीं अशोक, आपके अखबार में मार्केट हैज चीयर्ड अप और मैं अभी यहाँ पे ऑनलाइन देख सकता हूँ द सेंसेक्स has surged almost more than 1,200 points और ये 60,745 पर कर रहा है. निफ्टी ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच 1800 मार्क्स. क्या हेडलाइन होगी आपकी? हेडलाइन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसका कारण बहुत साफ है. 2-3 जो अनाउंसमेंट हुए पीएम आवास योजना में 66% की इंक्रीज की गई है
वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और स्पेशली इन द रूरल इंडिया, इसमें बोथ फॉर जॉब्स एज वेल एज फॉर कंपनीज गेटिंग बिजनेसेस इन दिस पीएम आवास योजना में बहुत बड़ा एक भारी होगा। दूसरी बात, रेलवेज आउटले, कैपेक्स आउटले इज वन ऑफ द हाईएस्ट एट 2.4 लाख करोड़। तीसरी बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 33%। चौथी बात है जो कस्टम्स ड्यूटी जो है उसके रेट्स 33 से 13 ला गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इससे सरकार ने ज्यादा रेवेन्यू उसमें प्रपोज नहीं किया। मैं देख रहा था कस्टम्स रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं, पर उसमें लगता है कि रिफॉर्म का जो सुगंध मुझे मिल रहा है ये एक अच्छी खबर है। और फाइनल मैं जो कहूंगा कि जो इनकम टैक्स रिलीफ जो दिया गया है वो मैं समझता हूं वो डिमांड के लिए काफी लाभदायक। लोगों की जेब में अशोक पैसे आएंगे इस बार ज्यादा आएंगे। और जो हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों में जिस तरीके से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन शेयर मार्केट में बढ़ा है, और ये भी वजह है कि ग्लोबल सुस्ती और मंदी के बावजूद दुनिया के मार्केट्स जब नीचे जा रहे होते हैं, हमारे शेयर मार्केट पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। और एक फाइनल बात, जो एक रवैया चल रहा था कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम में बदलाव लाएंगे, कुछ नहीं हुआ उसके ऊपर। तो इससे भी स्टॉक मार्केट को बहुत राहत मिली है, क्योंकि कैपिटल गेन्स टैक्स रिजीम का जो चेंजेस अगर बजट में होता, वो चेंजेस जरूरी हैं, पर वो अगर एक एक्सपर्ट कमेटी के कंसल्टेशंस के बाद बजट के बाहर हो, वो मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत ही एक इंटेलिजेंट एंड प्रैग्मेटिक मूव रहा है। बिल्कुल। प्रोफेसर चरण सिंह, आपसे इसी को आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहेंगे कि अक्सर पहले हमें देखने में आता था कि न्यूज बेस्ड, हम किसी स्टॉक कंपनी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन न्यूज बेस्ड मार्केट फॉल हो जाता था। लेकिन अब कुछ खबरें आती भी हैं, लेकिन मार्केट में इतना रोबस्ट है, मार्केट इतने स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं हमारे कि बहुत फर्क नहीं पड़ता। देखिए 1200 पॉइंट्स अभी मार्केट बढ़े हुए हैं। उसका एक कारण है। अब बजट में देखिए, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे, आपने कभी सोचा कि एग्रीकल्चर में एक्सेलरेटर प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को कहा जाएगा कि इस पे काम करो? मिलेट्स पे अभी नई रिसर्च शुरू होगी और कैसे उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, फिशर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, केमिकल्स फार्मिंग से हटाकर गोवर्धन की बात हो रही है। अगर इतने इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो हर तरीके से हर एक को हर प्रकार से जिसका फायदा होगा, स्टॉक मार्केट तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। तो पिछले 8 साल में मैंने एक चीज और देखी है, एक चीज सबके मन में स्पष्ट है, क्लियर है कि पॉजिटिव इंपल्सेस सिस्टमैटिकली इकोनॉमी में रिलीज किए जा रहे हैं। सीक्वेंशियली ग्रोथ को आगे बढ़ाया जा रहा है, नी जर्क रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, करके भूल के वो नहीं हो रहा है। आप देखिए, शुरू की पहली बजट स्पीच के शुरू में वित्त मंत्री ने कह दिया कि जो हम पीछे करते हैं उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ाने के अलावा अब एक विचार सबके मन में बैठ गया है। जब नए प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, कोविड हो गया, सब समझ गए, पर प्रधानमंत्री जी ने अपना स्तर और यार्डस्टिक कितना ऊंचा कर दिया है कि अगले 25 साल में हम कहां जाएंगे, उसके बारे में सब सोच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की बात हो रही है। इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर का लिमिट देखिए कैसे उन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। इसके अलावा हमने कह दिया कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट 6.4 से 5.9 आ रहा है, पर आप ध्यान से देखिए उसमें करेक्शन कहां हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट कम हो रहा है जी। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके का बजट आ रहा है और जिस तरीके का फोकस है या जिस तरीके की नीति बन रही है, उससे सबका उत्साह बढ़ रहा है। ये तो बड़ा प्रोग्रेसिव बजट है और ये बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट लेके आएगा। And to make it more inclusive, Professor Sharma, what the finance minister has announced in the field of agriculture is some kind of agriculture fund, actually investment to the agri startups which are going to work now in rural areas, focusing more on the problems faced by farmers, providing them solutions. So how big a game changer is that going to be, including the young startup culture, infusing their energy into finding solutions of the farmers in rural areas? Agriculture. The government has encouraged that young people come, and also they bring the technology, they bring the innovation, and also to address the challenges which are faced by agriculture sector. Now for these new startups,
are coming. If you see in the previous budget as well, this is the continued process that more and more people are coming to address the challenges, like you have the drone system, smart agriculture, which is increasing the income. Then along with the farmer producer organization, then providing concessional credit, as well as implementing agriculture infrastructure fund. So all these are encouraging many people to come to agriculture and bring their innovative ideas and effectively implement, so that the farm income, the actual person, the farmer's income should also be increased very fast. And these are the new startups. They are like drip irrigation, how much fertilizer needed for specific soil. All these are small things, but it's bringing a big change in agriculture. And that's why the Indian agriculture export has reached $50 billion. So this is an excellent thing which is happening at the moment. Thank you. Okay, Mr. Pradeep Goel from Assojam is connected with us now. Mr. Goel, thank you for your time. Your first response to the budget, sir. Do you find it inclusive? Because there's something for everyone in the in the budget this time. The middle class is happy. The agriculture sector has been given particular focus. And the government has tried to not bring in a lot of new things, but build on the reforms that it has been working on over the last couple of years. So what are some of the key takeaways for you in this budget? Mr. Pradeep Goel, am I audible to you? Yeah, thank you very much for inviting me today and asking me over for... Yeah, yes, you are audible. Am I audible? Please yes, confirm. yes. Yeah, please. Am I audible? Carry on, Mr. Goel, yes. Ma'am, am I audible? Loud and clear, Mr. Goel. Carry Hello, on. ma'am, am I audible? Ma'am, can you hear me? Wonderful. Yeah. Thank you for inviting me today. Thank you for inviting me today. Budget 2023 is to be looked upon not as a budget of 1 year. The budget is for the next 50 years. This budget is for everybody in the country. It's for public, it's for MSME, it's for professionals, whether it's from a service provider who is earning 10-15 lakh rupees, pensioners, whether it is for retired people or for government employees. So it's for everybody. So I think this budget is covering 100% of the countrymen, providing facilities for agriculture, credit schemes. So I think this is an exemplary budget, best ever in the last, I don't remember for how long, but it is the best ever budget, laying foundation for PM's dream of $5 trillion economy, which I think is going to go to 6, not only restricted 5, and laying foundation for a long-term India, not just a short-term India. And does it meet the expectations on the taxation front, Mr. Goel? This budget also covers the futuristic vision. Taxation front, I think the budget has been very caring for everybody. For example, as I already said, for pensioners, there has been benefits given to the pensioners. There is benefits given to the elderly, the benefits given to the individuals. I think, as I already said, there's everything for everybody in the budget, whether it is by way of taxes, by way of economic growth, by way of fruits, which will come out of this exemplary budget in the long term. Vision of green energy will also give the quality of life in the way of the living environment that we live in this world, on this planet, in the long term. I think, I would say it's a long-term budget for everybody in the country. Okay. Professor Singh, you just heard Mr. Goel describe it as a very, very futuristic budget. When we talk about it being futuristic, the finance minister did also mention how she and her government want to promote the artificial intelligence in India, and for which some amount of fund, 3 centers of excellence have been announced. What are the areas in which you see AI being used extensively in India, incorporating that in India's growth story? Means to me, when he said it is an all-round budget and everybody is benefiting, one thing, and he did mention about the industry and MSMEs, if you look at the credit guarantee scheme that's been extended, again, labor-oriented. Now, if you talk about the specific question of artificial intelligence and machine learning, immense scope, immense. It can happen in banking, it can happen in health,
it can happen in education, and the very fact that digital stamp is being so seriously used in the country and extensively the infrastructure is being laid out, artificial intelligence and machine learning will become the buzzword. Many times I feel India may not have to walk through the growth path, and it may leapfrog. Given the demographic dividend that we have, it may leapfrog. The FM said we have moved from the 10th position to the 5th position in a span of about 8 years. There is a possibility, if we are able to properly explore the digital world and combine the artificial intelligence and machine learning and bring it into banking, health and education, we could leapfrog much further. That's the advantage Japan had, technology, and this is exactly the advantage we are looking forward to. So I think by her establishing, bringing it in focus, the artificial intelligence and asking the centers to work on it is going to help the country a lot. To my mind, it's also time, because we are holding the presidency of G20 now. It showcases to the world how fiscal policy can be prudently used for technological development and engaging the young population, engaging their fascination. Absolutely. I think that also is the role or the thought which she has in her mind while formulating this budget. अगर हम ये कहें कि ये बजट किसानों को, महिलाओं को और वेतन भोगियों को एक तरीके से समर्पित है, खास तौर पे बाकी चीजों का भी पूरा ख्याल रखा गया है, और हम आपसे बात करेंगे ग्रीन ग्रोथ के भी बारे में. अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की, ग्रीन ग्रोथ के बारे में बात करेंगे. टूरिज्म को लेकर भी बहुत उत्साहित दिखी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हम उसके बारे में बात करेंगे. अभी कोई हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं शायद. Yes, Mr. Pradeep Goyal from Assam is with us. प्रदीप गोयल जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ. जी, आप इंडस्ट्री बॉडी से हैं. आप ये बताएं कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर वित्त मंत्री ने कहा है, उस पे इंडस्ट्री की क्या प्रतिक्रिया है, क्या एक्सपेक्टेशंस थे, और अब आप उस पे क्या त्वरित प्रतिक्रिया देंगे? बहुत ज्यादा नहीं थे फॉर लोअरिंग ऑफ टैक्स रेट्स. ऑलरेडी हमारा टैक्स रेट इन इंडिया इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एज फार एज द इंडस्ट्री गोज. हमारा टैक्स रिजीम इज कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत क्लियर है. सो हमेशा हम लोगों को एज इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स में डिडक्शंस, टैक्स एग्जम्पशन नहीं देखना होता. हमारे को देखना होता है हमारी आगे ग्रोथ क्या होगी, देश की इकोनॉमी कहां बढ़ रही है, जिससे हमारा बिजनेस बढ़े. टैक्सेस हम देंगे, इससे देश की ग्रोथ में टैक्सेस काम आएंगे. इट इज अ सर्कुलेशन, जहां पे हमारा टैक्स हमारे ही काम आएगा देश की ग्रोथ में, और हम ग्रो करेंगे. सो आई थिंक इट इज अ बैलेंस्ड बजट फॉर एवरीबडी. एज यू राइटली सेड, टूरिज्म सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आई थिंक इट इज फॉर एवरीबडी. इट्स अ अमेजिंग बजट, ऑसम, अमेजिंग. तो टीना, कुल मिलाकर लगभग हर तरफ से जो अभी प्रतिक्रियाएं कहीं से भी मिल रही हैं, बहुत ही अमेजिंग बजट लोग बता रहे हैं. एक तरफ जहां वेतन भोगी लोग खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ किसान काफी खुश हैं, वहीं बिजनेस करने वाले लोग खुश हैं. तो इसमें कहीं जो भी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो इसी तरह की आ रही हैं. You're right, Harjan. As you rightly said, a lot of focus has been on growth, green growth, and the finance minister has made a conscious effort to ensure that the development is not just inclusive and forward-looking, but sustainable in nature. And that's where the crux lies, because of the ambitious plans Professor Singh that India has laid out for itself. So in terms of energy transition, in terms of moving away from the fossil fuels, the kind of efforts that this government is making, and also the G20 theme is centered around the concept of growing sustainability. So how do you look at the efforts that have been made by the government towards sustainable growth? कंटिन्यूटी आ रही है, और इस टाइम पे G20 में प्रधानमंत्री जी ने वो लाइफ का भी कॉन्सेप्ट कहा है, जहां पे अब सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं. सर्कुलर इकोनॉमी की भी बात की गई है, जहां गोवर्धन की बात हुई है. आप ग्रीन की बात कर रहे थे, तो इन्होंने खुद बजट में कहा है हम क्लीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, जहां हॉर्टिकल्चर को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट और एडवांटेज मिलेगा. तो जो सस्टेनेबल ग्रोथ पैटर्न जो प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में भी G20 के टाइम भी कहा था, और G20 की जब पीछे मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में 2 हफ्ते पहले, उस पर काफी एम्फसाइज दिया गया था. वो क्लियरली यही था कि हम लोग जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है और फॉसिल फ्यूल से हटकर हम कहां पर आ रहे हैं.
तो इंडिया ने जो ये प्रयास किए हैं सोलर पे, विंड पे, ये काफी वर्षों से करते आ रहे, आज ही का नहीं है। अब इन्होंने कहा कि 15 साल पुराने जितने व्हीकल्स हैं दे विल बी फेज्ड आउट, वो भी उसी प्रणाली में एक नया कदम है। तो मुझे लगता है जो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल जो इंडिया का है, जहाँ हमारी ऑलरेडी कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम रहा है। 2 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि मैं 2070 तक इसको बिल्कुल नेट जीरो में ले आऊंगा, और जितना अभी प्रयास किया जा रहा है और बजट के थ्रू भी द अनाउंसमेंट्स दैट आर कमिंग, दे आर वेरी क्लियर दैट द, and madam of course fumbled at the pollution point and said critical, yes, right? So we are heading for a pollution less country, and I think all the thinking is in that direction. And what is the kind of support, Mr. Bhattacharya, that we will be providing to the states now? Because the finance minister has made that announcement, but towards phasing out of the older vehicles, the finance minister did also promise some kind of support and incentive. I think, there is a clear indication that the centre will go out of its way to help scrapping those vehicles. But coming back to your central question of how this budget is pushing the green agenda, there are 3 things that we must take note of. One is there is a clear, outlay provision. The announcements are backed with numbers. Now, number 1 is that 35,000 crore outlay has been provided for energy transition. Yes. Now, this is clearly to achieve the net zero transmission goal, which was made in an international forum by the Prime Minister. Now, that's number 1. And number 2 is the alternative fertilizers as an idea has now been accepted as part of the circular economy. And if you look at the alternative fertilizers and their benefits, they also actually help you reduce your fertilizer subsidy. Now, if you look at the fertilizer subsidy number is actually showing a decline for next year. So clearly, the government is actually looking at it not just merely by way of announcing, but looking at it from the way those announcements can be backed up with numbers. And the third and the final point is 10 million farmers. 10 million farmers is not a small number, will be included for natural farming. So this is a big initiative, and that initiative will also help how the overall the emission level and whatever agriculture needs to get the support by way of environmental help will get it. So I think these are an integrated approach on the alternative environment friendly initiatives have been announced in the budget. जी, और ये उदाहरण देखिए कि एक तरीके से जब हम ग्रीन ग्रोथ की बात करते हैं तो हाउ फार साइटेड द गवर्नमेंट इज। हम 2070 की बात कर रहे हैं, आज हम 2023 में हैं, 2070 की बात कर रहे हैं, आज से लगभग 50 साल 48 साल आगे की। और सरकार का ये मानना है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले देश बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा संदेश है, खास करके ऐसे समय में टीना जब हम G20 की प्रेसिडेंसी भी कर रहे हैं। हमें पूरी दुनिया को एक संदेश भी देना है कि भारत किस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है, लेस कार्बन एमिशन पर काम कर रहा है। Certainly, and we have to ensure that words match with action also. So the Prime Minister makes the commitment and the country follows it up also. We'll continue the discussion on other aspects also, but in the meanwhile, Mr. P. Khambata, Group Chairman, Rasna Private Limited, is also joining us on Sunset TV. Mr. Khambata, delighted to have you with us on this special coverage of the Union Budget. Your first comments on the Union Budget, how forward-looking is it according to you? Thank you. It's a great budget. It's a forward-looking budget for sure, because it's a budget of new ideas. And I think the whole emphasis on Amrit Kal means how India can now take the lead in really ensuring the Amrit Kal. Now, it is not only for the government to announce, it is also important that we all, people, citizens, industrialists, even the common men, academia, we all get involved. Now, let me give an example. The government has announced natural farming, organic farming. Now, can the government do it alone? You used to give 1 lakh crores, 2 lakh crores, what will happen if processing doesn't take place? So, industry has to now work with the farmer to ensure that the natural farming happens of the crops which we can process. And if we can process, we can get 5 times the value of the crops. And so that way, the whole economy can get benefited, and the farmer mostly can get benefited, industry can get benefited, and consumer will get good organic products at a good price, so that we eat chemical-free food. So I think it is a good thing for everybody. Similarly, if you ask me, there's a lot of exemptions have been given to middle-class people. Now, in my mind, that will also help industry, because consumption-led growth is there. And the benefits of infrastructure coming into rural areas will also benefit everybody. So I believe it's a good, positive budget.
Something is for everybody. It's a futuristic budget, and definitely a budget where I think when India takes the presidency of G20, we will tell the world that ultimately how India is taking it. Let us take an example of fiscal deficit. Even the developed countries in the world are not keeping any tab on their deficits. They are all going haywire. Now at that time, India has actually done a very good job of keeping the fiscal deficit under control. In fact, our Reserve Bank and our government has been praised by even international experts for that. And today the FM announced that she plans to further reduce the fiscal deficit. I think it is a very, very good news. It's a very, what I call responsible statement. And I am very happy that our FM is making that statement, and she is able to take the fiscal deficit in control, I would say. बिल्कुल, और आपने बहुत सही अभी ये पॉइंट आउट किया कि किस तरीके से हमारी सरकार जो है और रिजर्व बैंक इंडिया है आपस में मिलकर एक बहुत ही बैलेंस तरीके से आगे बढ़ रही है। और इसका हमने सबसे बड़ा उदाहरण देखा था तब जबकि रेट हाइक हो रहे थे और ग्रोथ को बिना अफेक्ट किए हुए बहुत बड़े ही धीरज के साथ आरबीआई ने काम किया। और आज हम देख रहे हैं कि हम महंगाई को भी काबू करने में सफल रहे हैं और हमारा ग्रोथ भी अफेक्टेड नहीं हुआ। और इसी तरीके से जो आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, फिस्कल डेफिसिट को भी हम मैनेज करने में काफी कामयाब होते दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वही कहने की ट्राई कर रहा हूं, इसीलिए मैं इसको बैलेंस बजट बुला रहा हूं। और चरण सिंह जी, आपके पास आते हैं। आपने कई संस्थानों में काम किए हैं और समावेशी विकास की बात में कभी मुझे याद है आपसे बात हो रही थी कि कोई बहुत गरीब आदमी था और वो बैंक में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाता था, खाता खोलना तो बहुत दूर की बात है। आज जो वित्त मंत्री ने एक घोषणा की है उसको खास तौर पर मैं यहां मेंशन करना चाहूंगा। जब वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात कर रही थी, समावेशी विकास के लिए वंचितों को वरीयता दी जाएगी। दे विल गेट द प्रायोरिटी। जो पीछे के तबके के लोग हैं, जो वो लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं। और इसका उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए, जेल में जो कैदी हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो बॉन्ड भर सकें, पैसे दे सके, सरकार ने उनके लिए भी योजनाएं लाई हैं और उनको सरकार पैसे देगी। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं उस टाइम पे रिजर्व बैंक में नौकरी कर रहा था, 2006 की बात है। उस टाइम पे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात इतनी चलती नहीं थी, हम लोग शुरू कर रहे थे। मैं वहां जाके सर्वे कर रहा था। बैंक ब्रांच के बाहर जो मोची बैठा है उसकी हिम्मत नहीं है, वो बैंक मुलाजमों के जूते रिपेयर कर रहा है पर उसकी हिम्मत नहीं है कि अंदर जा सके, इतना डर रहा है। तो उस डर से जब मिशन मोड में जनधन योजना को शुरू किया गया, और अब तो आज भी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, वित्त मंत्री जी ने, कि करीब 47 करोड़ लोग उस जनधन योजना और जैम ट्रिनिटी में आ गए हैं। तो उससे हम लोग ने फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी अटेन कर लिया है। जिस तरीके की सरकार की नीति भी है, अभी भी जिस तरीके उन्होंने खुद कहा कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में भी और आरबीआई के एक्ट को भी, और मुझे लगता है एनबीएफसीज को भी उन्होंने मॉडिफाई करके या रिविजिट करके देखना है किस तरीके जनधन तक हम लोग अच्छी तरीके से पहुंच पाए। पर यह बात जो अभी अभी इन्होंने कही वो बहुत अच्छी बात कही, जो फिस्कल स्पेस की बात कही। दुनिया भर में डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा चुकी है, जबकि एक तौर पे आधारित माना जाता है कि 60% से ऊपर कई कंट्री में 250 तक जा चुकी है। हमें हमारे देश को लोग आके समझाते थे कि आपको फिस्कल पॉलिसी करनी नहीं आती है। आज देखिए, इतना दुनिया बदल गई कि हम लिमिट के अंदर हैं और ये लोग लिमिट से बाहर हैं। उसका कारण ये था कि कोविड के दौरान जिस तरीके हमारे यहाँ नीति बनाई गई, बिल्कुल लेजर बीम करके सबको पैसा दिया गया, उसके पूरी इकोनॉमी को संभाल लिया गया। लिक्विडिटी ज्यादा नहीं की गई, जहां आप रिजर्व बैंक का नाम ले रहे थे, लिक्विडिटी भी मैनेज अच्छी तरीके की, उससे कीमतें बहुत कम बढ़ी। मैं भी कहता हूं 6% के करीब है, पर विदेशों में कीमतें तो 5 टाइम्स हैं एवरेज से। जहां 2% का नॉर्मल एवरेज 30 साल का है, वहां पर वो 10% तक पहुंच गए। हमारा 30 साल का एवरेज 6% है, हम लोग 6, 7, 8 के बीच में रहे हैं। तो ये जो नीतियां बनी, उससे फिस्कल स्पेस में भी हमने मेंटेन किया। उसी कारण डेट टू जीडीपी रेशियो कंट्रोल में रही, उसी कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता गया, उसी कारण इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रही। ये G20 की प्रेसिडेंसी में मुझे लगता है हमें ये मौका मिला, और ये बजट उसका प्रमाण है दुनिया को दिखाने का कि अगर आप पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बनाते हैं
अकाउंटेबिलिटी से बनाते हैं। बेशक आपके पास पैसा नहीं है, आप उतनी ही फोर्स से रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। उसी की नौबत आज ये हुआ कि हम लोगों ने जहां करेक्शन किया, यहां पर 6.4 to 5.9 0.5% से आप रेवेन्यू डेफिसिट में करेक्शन देखिए, मच मोर 2.9 से 1.4 है। तो मेजर करेक्शन रेवेन्यू डेफिसिट में हो रहा है। उसका कारण ही ये है अच्छी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी जो बन रही है। एक चीज और है उसमें, जिस प्रकार आज भी इन्होंने लेफर कर्व को यूज किया है और टैक्स स्लैब्स को कम किया है और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ईज कर दिया है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में जहाँ ईज भी होती है, वहां पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन पे भी होता है, कितनी जल्दी टैक्स अथॉरिटीज पहुंच के असेस कर सकती हैं। तो वो दोनों चीजें होती है। तो वो दोनों चीजों डिजिटल वर्ल्ड के कारण, आईटी के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, Professor, we'll have to stop at that. We'll have to proceed to telecast the live proceedings of the Rajya Sabhas. Over to Rajya Sabha. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Dr. Ram Kripal Sinha on 15 January 2023. Born on 3rd January 1936, Dr. Sinha served as a member of this august House from 1974 to 1980 and the Union Council of Ministers from 1977 to 79. His contributions as Cabinet Minister of Government of Bihar and as a Professor of English in various colleges across states of West Bengal and Bihar are commendable. In the passing away of Dr. Sinha, the country has lost an outstanding academician, committed parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn his untimely demise. I request the honorable members to rise in their places to observe silence as a mark of respect to the departed noble soul.
Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. The Union Budget 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. Thank you, sir. I rise to lay on the table a statement of the estimated receipts and expenditure of the government for the year 2023. Fiscal Policy Statements 2023-24, Srimati Nirmala Sitharaman. So with your permission, I rise to lay on the table a copy each in English and Hindi of the following papers under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement, and 2. Macroeconomic framework statement. I have to inform honorable members that the Business Advisory Committee in its meeting held on 31st of January 2023 has allotted time for the government business as follows. Discussion on the motion of thanks on the Honorable President's address, 12 hours. General discussion on the Union Budget for 2023-24, 12 hours. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 2nd February 2023. And वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने टीना आज बजट पेश किया 2023-24 के लिए, और इसमें जो आम जनता के लिए, जो वेतन भोगियों के लिए खास बात थी, हम एक बार फिर उसको रिपीट करना चाहेंगे। आम जनता को पिछले 8 साल से जिसका इंतजार था, दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वो उम्मीद पूरी कर दी है। वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था का ऐलान किया है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है ताकि हम सबको सुविधा हो। अब 7 लाख की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना होगा, जबकि 6 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए तक की अगर कमाई है तो आप 10% वाले ब्रैकेट में हैं। अगर आपकी कमाई 9 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक है तो आपको 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर सीधा
30% टैक्स लगेगा। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी प्रोफेसर चरण सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो बात कर रहे थे कि डेट टू जीडीपी रेशियो, इस पे भी भारत में बहुत अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो थोड़ा आप समझाने की भी कोशिश करें कि आर्थिक विकास के रास्ते में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो होता है अभी 55-57% के आसपास होगी, कितनी होनी चाहिए और इस टूल को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि देश हमारा आर्थिक विकास की प्रगति पर कितना और कैसे अग्रसर है। फिस्कल पॉलिसी में, वित्तीय नीति में ये डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत अहम जगह रखती है। डेट टू जीडीपी रेशियो का आप सिंपल तरीके से समझें, आप जितना ऋण ले रहे हैं हर प्रतिवर्ष आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, जो वित्त मंत्री जी ने कहा है 6.4 से 5.9 हो जाएगा, तो जो वित्तीय घाटा है उससे आपको ऋण लेना पड़ता है। जब आप ऋण लेते हैं तो पिछले कई सालों का ऋण जुड़कर एक बहुत बड़ा ऋण बन जाता है। उस ऋण के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो तो कमिटेड एक्सपेंडिचर है, और जो जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, हम अपने देश में 17% टैक्स टू जीडीपी रेशियो लेके चलते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश में बाकी देशों के निस्बत बहुत कम है। कई देशों में 40% से ऊपर है, ज्यादातर 30 से 35% होता है। हम 17% में बड़ा प्रयत्न करने के बावजूद ये ऊपर नहीं जा रहा है। इस साल थोड़ा इंप्रूवमेंट थोड़ा अभी मेरा ख्याल है थोड़ा ऊपर आएगा, क्योंकि लेफर कर्व यूज हुआ है, तो मुझे पूरा विश्वास है थोड़ा उछाल इसमें आएगा। पर पिछले 10 वर्षों से 17% चल। अब इतने जब विकासशील देश है, इतने प्रोजेक्ट्स हैं, इतना ग्रो करना है, तो पूरा आउटले होता है। तो आउटले के लिए आप फिर ऋण लेना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर ऋण हमारे देश में यूज होता रहा है सैलरीज, वेजेस, इन चीजों में, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, पेंशन्स, इसमें यूज होता रहा है। कुछ 3-4 वर्षों से वित्त मंत्री जी ने क्या कहा कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा जोर डालेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट को रिस्ट्रिक्ट करते जाएंगे। जितना ज्यादा ऋण आप लेंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा। पर अगर आप फाइन ट्यून करेंगे ऋण को इस तरीके कि उसकी मैच्योरिटी थोड़ी कम कर लेंगे, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इंटरेस्ट बर्डन बजट पे थोड़ा कम हो जाएगा, पर उससे रोल ओवर रिस्क बढ़ जाता है। हम लोगों ने हमारे देश में बहुत अच्छे तरीके से, कुशलता से, जो ऋण टू जीडीपी रेशियो है, जो दुनिया का स्तर है, स्टैंडर्ड है, मैस्ट्रिच ट्रीटी में 60% होना चाहिए, हम लोग उससे नीचे चल रहे हैं, जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमारे यहां पर भी फाइनेंस कमीशन ने स्टडी की। 15th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि सेंटर का 60 के करीब होना चाहिए, ओवरऑल हम लोग 85 के करीब होने चाहिए। स्टेट्स को अगर मिला लें, स्टेट्स को मिला लें तो 85, और सिर्फ सेंटर की बात करें तो जो स्टैंडर्ड है 60, हम उससे नीचे 50-60% होना चाहिए। लेकिन इसमें यहाँ एक पूछना चाहूंगा कि ये जिस तरीके से मैनेज किया गया है, इसमें फिर वो रोल ओवर वाली बात आ जाती है। तो यही कुशलता है, जिस तरीके जो बकेट्स हैं अलग अलग मैच्योरिटी प्रोफाइल को बैलेंस करके सरकार ने आगे ऋण किया है। अब दुनिया भर में कोविड के बाद, 2008 लेमन ब्रदर्स के बाद तो बहुत बढ़ गया था, पर कोविड के बाद दुनिया भर में ये स्तर, वही जो बहुत विकसित देश हैं जो हमें सिखाते थे और कहते थे, उन सब का अभी डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा रहा है, कईयों का 200 से ऊपर है जी। तो ये मुझे लगता है कि G20 की प्रेसिडेंसी में सरकार को दुनिया को ये बताना चाहिए कि हमने कितने प्रयत्न किए और किस कुशलता से ऋण भी लिया। टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है, उसके बावजूद ऋण लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, पर हमने डेट टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ने दी। उसमें हमने बकेट्स, किस मैच्योरिटी बकेट, किस प्रोफाइल है, उसको किस तरीके कुशलता से यूज किया, वो बहुत सराहने वाली बात है। और यही कुशलता हमें बताती है कि पूरी दुनिया आज कह रही है टीना कि भारत जो है वो आर्थिक फ्रंट पर, अर्थ जगत के फ्रंट पर एक ब्राइट स्पॉट है, और यही वजह है कि यहाँ इन्वेस्टमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं। और दुनिया के बाकी देश, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन सहित, जापान सहित बाकी देश जहां थोड़ी सुस्ती और मंदी की चपेट में आ रहे हैं या आ चुके हैं, वहां भारत अभी भी बुलंदी के साथ अपना बजट पेश कर रहा है
और एक तरीके से कहें सबको कुछ न कुछ, सबकी किटी में कुछ न कुछ डाल रहा है। You're right, Harsh. And since you spoke about kushalta, let me frame my next question accordingly to Professor Sharma. The fact that, a lot of thrust of this government has been on skilling and upskilling the youth. The youth today are our biggest strength, and they are the ones who are going to define India's growth in the times to come. So to encash on their talent, on the demographic dividend advantage that we have only for a limited period, of course. So we have to keep that in mind, and we have to ensure that the skilling and upskilling is a continuous process. Towards that, the Kaushal Vikas Yojana, I believe the fourth such program has been announced. Now, if I could understand further from you on the importance of this program, how successful have the previous versions been so far ever since the Kaushal Vikas Yojana program has been announced by the government? The important thing is that if we really wanted to do the economic development, we need skilled workers. Clearly. And skilled workers, and for this the education and the expenditure on the education institute, the center of excellence, then as well as now in the budget, there are many schemes have been initiated by the government for skill development. Even not only for the workers, but also for even the government employees, the capacity building programs schemes also has been initiated in this scheme. So if we really wanted to capitalize on the demographic dividend, so this is the better way to match the skill to the industrial expectations. So because this youth will go to the industry, and if this is match, the skill is matched, then it would be their employability as well as contribution to the economy will also increase substantially. Absolutely. So this is the... We'll continue to, decode the various announcements, the various aspects that the Finance Minister has laid stress upon in the Union Budget for 23-24, also laying the roadmap for the future, in fact, not just this decade, but for the next 25 years. We are joined by Mr. Vineet Mittal. He's Group Chairman of the Avada Group. Mr. Mittal, thank you very much for your time. Your first response to the budget, sir. And does it meet the expectations, the pre-budget expectations of the industry? So if you look at, I come from green industry, and it was very encouraging and delightful to see the India's government's continuous focus on greening the planet and focusing on decarbonization. So in terms of our own expectation at an industry, we were focusing more on what government is going to do on green growth, decarbonizing the economy, infrastructure spend. On all of that, government has done amazingly well. 33% increase in capex when the rest of the world is talking about recession and deflation, and India is continuing to focus on growth, is a very encouraging step. And the way they have designed the budget this time, even the states are incentivized to draw down at 0% based on capex. So if you look at, that's going to be a very encouraging step. The focus on education and youth. So India is all about Indian talent, and focusing on them to continuously unleash their abundance by retraining them, by upskilling them, so that industry doesn't have to skill them for 6 months to a year and you can get the ready resources, is a very welcome step. What they have done, in my view, is aligned their G20 vision and priority of green growth, decarbonizing the economy in the budget as well. And it will give a very strong message to the rest of the world. See, there are very few spots in the world where world can invest and benefit. आज इंडिया में इतनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि भारत सरकार जब खुद 13 लाख करोड़ इन्वेस्ट करेगी, आज सभी की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और जस्ट ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में 125 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 7 साल में होगा. सोलर, विंड, पम्प्ड हाइड्रो में अनदर 375 बिलियन का. तो $500 बिलियन तो सिंगल सेक्टर ऑफ एनर्जी के अंदर होगा. तो अगर इतना इन्वेस्टमेंट होना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ रही है. तो देश विदेश के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है. सो गवर्नमेंट न केवल अपने मैसेजिंग में बट अपनी पॉलिसीज में बिल्कुल कंसिस्टेंट है,
और फिस्कल डिसिप्लिन भी जो दिखाई है, इससे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ग्लोबल पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अपना भविष्य बहुत अच्छा है। 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2030-2031 तक। Absolutely, you're right, Mr. Mittal, and that is the kind of optimism that has been reflecting. We have guests with us in the studio who've been talking about the sunshine sectors as well for India. But since, you mentioned about green being the future, in fact, it's already the present and it being clearly the future. You spoke about how it's important to align the educational needs with what the industry wants also. How do we take it forward? That's a prominent announcement made by the finance minister that the education should be in a way which aligns with what the industry wants. So how do we take it forward in the times to come? So if you look at what we do as an organization, we are reaching out to NITs, IITs, technical institutes, or even ITI for that matter, and seeing what we would need as an industry. And to my surprise and pleasant surprise, last year around 8 to 10 ITI agreed to actually train the engineer on our curriculum so that we can employ more than 2,000-3,000 people in our upcoming manufacturing project of cell to module manufacturing. And we were really worried and scared that how will we get so many manpower at such a short notice. And institutes were willing and they want to work in partnership with the industry, but industry has to go and talk to each and every institute individually right now. And I think with the government's focus and education department's focus on aligning their curriculum with the industrial need and future of the industry is a welcome step. Absolutely, so the right kind of collaboration among all stakeholders who can take this idea forward. As well as with the help of government, because future is of India, whether it is manufacturing sector or absolutely. Thank you, Mr. Mittal, for joining us on the program with your perspective. Meanwhile, let's go across to the Parliament complex where my colleague Suraj Mohan Jha is joined by a group of parliamentarians. Suraj, over to you. यहाँ पर हमारे साथ 3 सांसद अभी मौजूद हैं राज्यसभा के। अभी राज्यसभा में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को सदन के पटल पर रखा है और इस बार का बजट ऐसा कहा जा रहा है कि कृषि, मध्यम वर्ग, महिलाओं के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से काफी सकारात्मक है। तो आइए हम सांसदों से बात करते हैं। हमारे साथ हैं विजयपाल सिंह तोमर जी। आप उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है, किसान नेता के तौर पर आपकी छवि रही है। सर, अगर मैं किसानों के लिहाज से कहूं तो किस तरह का बजट है? ये बजट देखिए, देश भी कृषि प्रधान देश है और जब से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है लगातार किसानों के लिए वरीयता पर रखा गया है और उनकी सहूलियतें दी जा रही हैं। और इस बजट में भी जो कृषि के ऋण का मामला है उसको बढ़ाने का काम किया गया है और चिंता की गई है, किसानों की भी चिंता की गई है, आम आदमी की चिंता की गई है, गरीब लोगों की चिंता की गई है। प्रधानमंत्री आवास में बढ़ाने का काम किया गया है। तो कुल मिला के बजट साधारण निचले तबके के, मिडिल क्लास के लिए और किसानों के लिए, गांव के लिए बहुत अच्छा बजट है। विजयपाल सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए, वंचित वर्ग के लिए बजट काफी अच्छा है। हमारे साथ बस साहब है। बस साहब, मैं अगर रक्षा विभाग के लिहाज से बात करूं तो किस तरह इस बजट को देखते हैं? मैं कहता हूं एक्सीलेंट बजट है। कैपिटल आउटले को बढ़ा दिया गया है। देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले तो मैं विजयपाल जी से रजामंद हूंगा कि अगर किसान के लिए बजट अच्छा है तो जवान के लिए और भी बेहतरीन बजट है। कैपिटल आउटले मल्टीपल टाइम्स बढ़ने की वजह से हथियारों का मैन्युफैक्चर, हथियारों की खरीद और हमारी पे एंड अलाउंसेस जो कि 1 रैंक 1 पे तो लागू भी हो चुका है और मिल भी चुका है। तो ओवरऑल डिफेंस के लिए, देश के लिए, और सैलरीड ग्रुप यानी 7 लाख तक की सैलरी अब टैक्स फ्री है। ये एक जुबिलिएशन का मैटर है कि सैलरीड ग्रुप के लिए ये एक्सीलेंट बजट है। बिल्कुल, सैलरी क्लास के लिए ये अच्छा बजट है। जुगल किशोर सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं। आप गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। सर, अगर मैं कारोबारियों के लिहाज से बात करूं तो काफी रियायतें दी गई हैं। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी रियायतें दी गई। आपने देखा होगा कि एमएसएमई के अंदर 9,000 करोड़ का उन्होंने आवंटन किया है। मतलब कि आप देखिए, बूस्टिंग करेगी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो बूस्टिंग करेगी। और आप देखेंगे आने वाले साल के अंदर
हमारा भारत का ग्रोथ जीडीपी जो ग्रोथ है वो बढ़ के आगे जाने वाला है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बच्चों को और युवाओं को साथ में उन्होंने जोड़ा है। वो किस तरह जोड़ा है कि डिजिटल के माध्यम से वो लाइब्रेरी वगैरह बनाने का और बच्चे वहां से वो ज्ञान वगैरह वो लेंगे। तो उस तरह का जो माननीय निर्मला सीताराम जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, तो आने वाले वक्त में हमारा जो भारत बूस्टिंग करेगा वो अनबिलीवेबल होगा। और हमारे काफी सारे कारोबार के अंदर उन्होंने रियायतें दी है। जैसे हमारे जनरल साहब ने बताया कि 7 लाख तक की, तो जो आम लोग जो थे 5 लाख तक जो पहले टैक्स पे करते थे, आज 7 लाख के दायरे के अंदर, मतलब भी मान लीजिए 50,000 60,000 की उसकी सैलरी हुई तो वो खुद टैक्स पे नहीं करना है, तो वो आराम से जिंदगी जी सकेगा, उसका बजट बना पाएगा। तो बहुत फुल गुलाबी बजट दिया है। मैं निर्मला जी का आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। तो हमारे साथ अभी 3 सांसद मौजूद हैं। अभी हमारे साथ जम्मू से जुगल किशोर शर्मा जी भी मौजूद हैं, लोकसभा के सांसद। उनसे भी जानते हैं जम्मू कश्मीर के लिहाज से यह बजट किस तरह का रहा है। सर, अगर बजट अगर आपसे जानना चाहें इस बार। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश भर के नागरिकों में एक खुशी की लहर है कि बहुत ही अच्छा बजट जो है वो नरेंद्र भाई मोदी, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी बहन निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने पेश किया है। आपने देखा होगा कि छोटे से छोटे वर्ग के लिए भी और बड़े वर्ग के लिए भी सारी सुविधाएं उन्होंने दी हैं। और विशेष तौर पर आम नागरिक जो मेहनत करता है, मजदूरी करता है और मजदूरी करके कुछ पैसे इकट्ठे करता है, उस पर जो टैक्स का बोझ पड़ रहा था ना, उससे उनको आज निजात मिली है। इसलिए मेरी यही वित्त मंत्री सीतारमण जी को मुबारकबाद है। और विशेष तौर पर लोगों की तरफ से अभी मैं देख रहा था कि मुझे कई फोन आ रहे थे कि इस बार का बजट जो है बहुत ही बढ़िया बजट जो है वो पेश हुआ है। धन्यवाद। तो अभी हमने राज्यसभा के 3 सांसद और लोकसभा के 1 सांसद हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि इस बार का जो बजट है वो किसानों के लिए, जवानों के लिए, कारोबारियों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए काफी कुछ अच्छा रहा है। सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So Harsh, reactions continue to come in from the Parliament House complex. The parliamentarians hailing it as Umeedon ka budget, a welfare budget in fact. What's interesting is it's one of the shortest by Nirmala Sitharaman. Within 90 minutes, but very, very high on substance. Let's also hear. कई बार चीजें होती हैं वो बहुत ही अहमियत वाली होती हैं और मुझे लग रहा है कि इस बजट में ढूंढना पड़ेगा कि विपक्ष भी क्या कहे, कहाँ शिकायत का मौका है। Let's also hear from Mr. S.C. Agarwal and Mr. V.K. Singh. They've spoken to my colleague Mohammad Fateh Tipu and Akhilesh Suman. So let's hear what their reaction to the budget is. अमृत काल का पहला ये आम बजट है। कैसे देखते हैं आप पूरे बजट? इसमें हर कुछ है, जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग्स की लिमिट बढ़ा दी है। HNI का जो 42% टैक्स था वो 39% समथिंग मैक्सिमम टैक्स रहा है, वहाँ एक रिलीफ दिया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का 10 लाख करोड़ से ऊपर एलोकेशन किया है, जो कि लास्ट ईयर 7.5 लाख करोड़ था। इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा इकोनॉमी ग्रो करने के अंदर। सर, पीएम मोदी का एक बयान आया था कल, उन्होंने कहा था कि ये आम बजट देश के लिहाज से तो बेहतर होगा ही होगा, साथ में दुनिया के लिहाज से भी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस लिहाज से भी ये बजट बेहतर होगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश के हिसाब से तो बेटर है ही और इंटरनेशनली भी बेटर है, क्योंकि हम PLI स्कीम के अंदर इंडस्ट्री को इनवाइट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जो 15% कंसेशनल कॉर्पोरेट को टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, वो एक्सटेंड कर दिया है। तो इससे क्या फायदा है कि जो बाहर जो चाइना का एक तरीके से चाइना +1 वाला जो ब्लॉकेज था, तो उससे बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में आना चाहती है, तो उनके लिए सुविधा है। बजट कैपेक्स रिलेटेड है, अच्छा बजट है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना देश सुधरेगा, अच्छा बनेगा, अच्छी सहूलियत आएंगी। और इसी तरीके से एविएशन के अंदर भी एक टारगेट है। अब तक हमारे पास 100 एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप्स, वाटर एयरड्रॉम्स, इनका टारगेट था, अब 50 और का हो गया। तो इनके ऊपर जब पैसा लगेगा तो पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज में चला जाता है, अलग अलग चीजों में जाता है, सबको फायदा होता है। उससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। जितना पैसा चलायमान होगा
उतना इकोनॉमी अच्छी चलेगी। लेकिन सर, आप फॉर्मर डिफेंस पर्सनल भी रहे हैं, आप विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं, आप कहें कि अगर डिफेंस के हिसाब से इस बजट को देखें तो कैसा रहेगा? देखिए, डिफेंस के अंदर पूरा ध्यान आत्मनिर्भरता के ऊपर है और इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आत्मनिर्भरता और सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस जो क्रिएट हो रहे वो सब मदद करेंगे। तो क्या इसमें डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट की जो बात है वो एक्सपोर्ट का अगर हम बनाएंगे अपने यहाँ तो एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारे यहाँ जो चीजें बन रही हैं और जो विश्व स्तरीय हैं वो एक्सपोर्ट भी होंगी। आपको एक्सपेक्टेशन जैसा था वैसा ही ये बजट है या उससे कुछ ज्यादा है या कम? एक्सपेक्टेशन था कि प्रोग्रेसिव बजट होगा, वैसा ही। तो अगले 1 साल का बजट है या 25 साल का? ये 25 साल की नींव है। तो ये 25 साल की नींव है। बजट भले ही 1 साल का हो, ये कहना है रिटायर्ड जनरल वीके सिंह का, जो वरिष्ठ डिफेंस पर्सनल भी रहे हैं और राजनीति में भी काफी सक्रिय हैं। संसद टेलीविजन के लिए अखिलेश सुमन। जी बिल्कुल, ये दरअसल भारत जब 100 साल का होगा, आजाद भारत 2047, अमृतकाल का पहला बजट, अगले 25 साल का रोडवे है और उसकी पहली सीढ़ी है ये बजट। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदित्य चमड़िया जी, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लिमिटेड में। आपका स्वागत है। आज का बजट आपने देखा, टूरिज्म सेक्टर के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बजट को आप कैसे देखते हैं और टूरिज्म का कितना विकास हो पाएगा, आप बताएं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने टूरिज्म पे इस बार खासा फोकस किया है, जो कि एक अच्छी बात है, रोपवे इंडस्ट्री के लिए भी अच्छी बात है। और यहाँ पर 50 डेस्टिनेशन वो आइडेंटिफाई करेंगे और जहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, तो होपफुली वहाँ पर रोपवे इंडस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है जो सिटी को डीकंजेस्ट करने में। वहाँ पर भी रोपवे के कई प्रपोजल्स आए हैं एंड उन्होंने जो 18% जीएसटी था उसको 5% किया है एंड रोपवे को काफी बड़ा बढ़ावा ऑलरेडी दे रखा है। जी, इसमें आपने कहा कि रोपवे को काफी बढ़ावा दे रखा है। अभी भी हमारे देश में अगर टूरिज्म की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में 7-8 वर्षों में काफी कुछ विकास हुआ है, कुछ ऐसे नए एरियाज भी आए हैं जो टूरिज्म के लिहाज से काफी पनपे हैं। लेकिन अभी भी क्या आपको नहीं लगता कि रोपवे जो है हमारा टूरिज्म में जितना इस्तेमाल होना चाहिए अभी उसमें कमी है? एकदम बहुत काफी कमी है। आज हमारा जितना विशाल देश है उसके हिसाब से हमारे यहाँ रोपवे बहुत कम है। एंड एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अहम स्टेप जो गवर्नमेंट ने लास्ट 2 साल में लिया है, एनवायरमेंट क्लियरेंस, जो कि काफी साल लग जाते थे एनवायरमेंट क्लियरेंस लेने में, रोपवे के लिए उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। रोपवे को उन्होंने एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने डिक्लेयर किया है एंड इससे काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा रोपवे को। और आगे जो 5-10 साल में आप काफी सारे रोपवे आप देख पाएंगे इंडिया में। बिल्कुल ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चमड़िया जी। और बजट पर संसद टीवी में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ये चर्चा रात तक जारी रहेगी, देर शाम तक। और आप देखते हैं, before we wind up this program, Mr. Rajan Navani, VC and MD, JetLife Group of Companies, also joins us from the CI. Very quickly, let's also get his response on the Union Budget 23-24. Mr. Navani, thank you for your time. Your quick response to the Union Budget and what stands out for you in this budget, which is being hailed as a very, very forward-looking one by the government. Yeah, I think, this is definitely a very progressive budget. It is built in our Amrit Mahotsav in the 75th year of Indian independence, and very clearly the 7 priority areas, identified by Honorable Finance Minister, be it inclusive development, green energy, youth, are all ones that are going to, lead India to a position of global leadership by India at 100. So truly a path-breaking budget in that sense, built on a very strong foundation. And I think what has really worked well
is the advancement of many of the initiatives that the government has already focused on in the past. So we've got a very strong digital public infrastructure on finance and health, taking that to agriculture, creating a pool of funds to be able to spur innovation in agriculture, which is really tier 2, tier 3 rural youth getting engaged with digital, with entrepreneurship, with innovation, reducing taxes in the hands of the common man so that, you can spur spending and growth. I think all will work together to, create a very virtuous cycle that I believe is going to be directionally in the right way for the future of the country. So overall, I do definitely feel that it's a very strong, good, forward-looking budget which has been, announced today by the Honorable Finance Minister. तो बिल्कुल बजट के बाद जो तमाम सेक्टर्स को उम्मीदें थी, क्या उन उम्मीदों पर बजट खरा उतरा है? लगातार संसद टीवी पर आप बजट से जुड़ा जो तमाम बारीक विश्लेषण है वो हमारे साथ देख रहे हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल दहिया भी इस समय जुड़े हुए हैं और जाहिर तौर पर माना यही जा रहा था कि जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात होती है उसमें चमकती अर्थव्यवस्था के तौर पर कहीं ना कहीं उम्मीद भरी नजरों से भारतीय अर्थव्यवस्था को देखा जा रहा है। ऐसे में इस बार के बजट पर न सिर्फ देश की निगाहें थी बल्कि ये माना जा रहा है कि दुनिया भर की निगाहें इस बजट पर लगी हुई थी। तो अब वित्त मंत्री के पिटारे से जो घोषणाएं निकली हैं उससे कितना बड़ा बूस्ट भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा, इस पर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। Well, yes, Preeti, thank you so much. So, as you've been witness to this year's union budget, which was presented by the finance minister, starting 11 a.m. In the lower house today, and of course reactions coming in, details coming in right now. We're keeping you updated on what exactly the budget has in store for various sectors and specifically for the common citizen of the country as well. So we'll keep on bringing you all the details in the next 1 odd hour. We will talk about sectors like manufacturing and of course, the most important aspect of the budget as far as the income taxpayers are concerned, the changes in the personal income tax regime as well. Those will also be part of the discussion. Preeti? बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगातार सरकार का जोर रहा है, मेक इन इंडिया पर लगातार सरकार जोर देती रही है। तो क्या बजट में इस बार उपाय किए गए हैं ताकि मेक इन इंडिया का जो सपना है, पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, वो कितना पूरा होता दिख रहा है, उसे कितना बड़ा पुश मिलने वाला है, ये हम अगले 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। टैक्स लॉज में जो बदलाव है वो किस तरह से आगे भारतीय अर्थव्यवस्था को पुश देंगे और खास तौर से जो डायरेक्ट टैक्स में इस बार हमने देखा है कि रिबेट को लेकर जो एक तरह से स्लैब बढ़ा है, उसका किस तरह से फायदा मिलेगा, परचेजिंग पावर जब लोगों की बढ़ेगी, आम आदमी की जो आशाएं थी वो काफी समय बाद पूरी हुई है, किस तरह का बदलाव इसके जरिए देखने को मिलेगा। साथ ही हम जो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगातार बात कर रहे हैं विशाल, तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ अब चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उनके साथ। और जैसा मैंने कहा विशाल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, मेक इन इंडिया को लेकर लगातार जोर रहा है और कोरोना महामारी के बाद जब कहा जाता है कि आपदा में अवसर को देखना, चीन की तरफ मोहभंग दुनिया का, भारत के पास एक मौका ज्यादा है, किस तरह से उसे पुश दिया जाए, बजट क्या बता रहा है? Indeed, Preeti, and there's been a lot of focus on sectors like manufacturing, MSME, given the kind of announcements in the budget, and we have with us our guest as well, Raju Navani is still with us. Rajuji, when we look at these particular sectoral allocations and then when we try and understand as to what the budget has given, what kind of impetus are we looking at? Because it's not just, the recovery phase, which we have successfully navigated for the past 1.5 years, but also, again, laying that strong foundation for the next 25 odd years. No, absolutely. I think the PLI scheme, that the government started and now, extending that to new sectors, continuing some of those areas have really spurred manufacturing, within the country. And as we all know, a strong manufacturing sector drives tremendous job creation. I think the large spend that the government is making on infrastructure is also going to be the basis on which a lot more manufacturing will become competitive. Manufacturing competitiveness really comes from very, very strong infrastructure that a country needs to have. So I think all of that will result
and probably get our exports. It will, definitely change the narrative. Today the world talks of a China +1 strategy and considers India to be, that +1. What if in 25 years we have an India +1 strategy for the rest of the world? Now, how do we navigate from where we are to where we want to be? And I think for that, manufacturing is definitely going to be a very, very strong base. Like I said earlier, the youth, the digital, the innovation, the entrepreneurship is also creating, significant amount of jobs. If our manufacturing and services sectors continue to accelerate that, I think we will be, the only people in the world who can cater to the, shortage of manpower supply that is going to happen. And, nothing takes away the fact that 1 in 10 people in the world today is an Indian under the age of 25. Okay. And that, kind of point comes only once in the lifetime or a history of a nation. So not only an Indian under the age of 25, and over the next 25 years, these are going to be the consumers, they are going to be the producers. The largest employable workforce is going to be these Gen Zs. I think 27% of the global workforce by 2030 will be Gen Zs. And if they are, skilled properly and enabled, right, we have a digital platform announced for enhancing skills. And if that can really take off from India, I think we will, propel ourselves at a much faster pace than what we have been doing so far. So, truly excited about, some of the announcements that the budget has made. But the unique part will come when all of this really falls into place as small pieces, creating a virtuous cycle of growth. Indeed, Mr. Raju, that is true. All things are closely interlinked. And the way this intricate planning and allocation has been made, we'll have to understand it much better. We'll continue with our guests as well. We'll have a few more experts on the panel. But before we do that, let's also listen into Finance Minister Nirmala Sitharaman, her reaction after the budget. Vivad's proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax. इसका सीधा प्रसारण आप अब संसद टीवी पर देख पाएंगे. Well, indeed, it's the customary reaction which will come in from the Prime Minister a few hours after the budget speech is delivered by the Finance Minister in the lower house and the budget document is placed in the upper house as well. The Prime Minister, shares his thoughts with the nation on the budget which has been presented by his government. So stay tuned. In just a short while, we'll hear from the Prime Minister himself. अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा. ये बजट वंचितों को वरीयता देता है. ये बजट
आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए।
इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमई को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमई को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। So there it is. You heard the Prime Minister himself summing up the budget, the key focus areas of this year's Union budget targeted at various sectors
various sections of the society as well. And we'll talk about all those sectors and sections throughout the rest of the day as well. Preeti? बिल्कुल। तो 2047 में जो समृद्ध भारत का सपना है, हर तरह से हम समृद्ध हों, हर क्षेत्र में समृद्ध हों और कहीं ना कहीं मजबूत नींव के निर्माण इस बजट ने कर दी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जो बात कही, जो संबोधन दिया उसमें कही है और जनहित में कई कदम उठाए गए हैं। जो देश का निर्माण करने वाला छोटा छोटा व्यक्ति है, उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मजबूत करने की कोशिश की गई है। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं जो इस समय चर्चा में जुड़ रहे हैं। यतीश राजावत सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर WTO IIFT, और साथ ही तमाम और मेहमान हैं जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सचिन शर्मा जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 2047 का समृद्ध भारत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना है और इस बजट ने कहीं ना कहीं उसके लिए एक नींव तैयार कर दी है। दुनिया भर की, जब मैंने जैसा कहा कि दुनिया भर एक आशा भरी निगाहों से देख रही है, G20 की अध्यक्षता इस समय हमारे पास है और आर्थिक सर्वेक्षण में भी हमने देखा था कि कवर पेज G20 को लेकर ही जारी किया गया था। तो वो जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों के लिहाज से किस तरह का बजट? धन्यवाद। अगर इस बजट को हम देखें तो ये अमृतकाल की नींव प्रस्तुत कर रहा है और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है जो इस बजट में है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये देखेंगे इवन 2003 से पहले गवर्नमेंट ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग किया था और जिसका बेनिफिट कुछ टाइम बाद मिलता है और वो 2003 से लेकर लंबे समय तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हाई रही। यही इस बार जो बजट में 10 लाख करोड़ जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया जाएगा, ये एक नींव रख रहा है जो आगे आने वाले टाइम में इंडिया की ग्रोथ को काफी तेजी से इंक्रीज करेगा। इसके साथ साथ अगर आप G20 की हम बात करें तो आप ये भी देखेंगे कि इंडिया ने रिसेंट ईयर में एक लीडरशिप प्रोवाइड की है एट द ग्लोबल लेवल, चाहे वो वैक्सीनेशन का एक्सपोर्ट हो, चाहे फूड क्राइसिस के वक्त हम लोगों ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को और दूसरे कंट्रीज को हमने फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया हो। तो ये G20 में भी हमने काफी कंट्रीज के नजरिए से भी हमने बहुत बड़ी लीडरशिप प्रोवाइड की है। इसके साथ इंक्लूसिव ग्रोथ, फार्मर से लेकर मजदूर, वुमेन, ट्राइबल एरिया, इवन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से लेकर आप देखेंगे कि सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उन सबका ध्यान रखा गया, चाहे MSME सेक्टर हो जहां पे कंसेशनल लोन दिया गया, जो जिस विश्वास से गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने इस बजट में महत्वपूर्ण सेक्टर्स में इन्होंने खर्च किया है, इसके बेनिफिट आने वाले टाइम में हम देखेंगे और हमारी जो ग्रोथ है वो तेजी से बढ़ेगी। स्पेशली जब ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि काफी देशों में रिसेशन की स्थिति है जी और आने वाली है, और उस मामले में ये सही होगा कहना कि इंडिया विल बी अ शाइनिंग स्टार अमंग all the nations. Okay. Indeed, those are the key focus areas. Yatish, I'd like to bring you in here, and given by the kind of summary which the Prime Minister presented, and also if you go back to the original approximately 90-minute odd long speech by the Finance Minister, and I'm sure you would have looked through the budget documents also in the meanwhile. Not fully. There can be several monikers which can be, given to the budget. As the Prime Minister also spoke about green, focus on green areas. So green budget, can that be one aspect? People's budget, can that be another aspect? By people, I mean workers, with the Prime Minister also specified about various sections of the society which are in focus, which need to be in focus if the economy has to move ahead for the holistic growth which we always talk about. So, the way I look at it, Vishal, is, he used the word foundation. Neev rakhi hai agle 25 saal ki. So what is this foundation? If you look at it from economic terms, there are three parts of the economy largely, the agriculture, manufacturing and services. Now for manufacturing, the last 2 years we have been giving a very important incentive, which is the PLI. So this year the focus has been on services and agriculture. On services, if you see, there are two big things the budget does. One is tourism. Now tourism per se is the largest multiplier for any sector. Every dollar invested in tourism gives $7 of income downstream. Okay. So, and these are all services jobs. Okay. So they have said that
they will identify 50 new destinations. Now, this is not an allocation in that sense, but the way they have structured it is that cities will have to rise up and challenge for this so-called scheme. Second is healthcare. You see the new hospitals, doctors, nursing, these are all new jobs. And healthcare, as we have seen in the last 2 years, is an important area for any developed economy to have. You cannot aspire to be a developed country till such time you have a healthcare which is equivalent to a developed country. Okay. But the other side of it is that healthcare is the only stable long-term employment option at the nurses level, at the caregiver level, and even at the doctor level for for the country. 1/3 of doctors in US, the top hospitals there, are Indians. So they are now trying to bring healthcare as a priority sector again. Services. Similarly, on the agriculture side, there is a shift here. There are elements of the shift. One is the Shri Anna that he promised. Now, this Shri Anna has to be looked in from the prism of 3 layers. One is that millet is a non-fertilizer, non-chemical, organic produce, which breaks the water cycle of rice and wheat. And we're further building on our capacity here as well. We're the largest producers. We are the largest producer of milk. We were the largest consumer of milk. But what has happened over the last 50 years, we have given up this superfood and we have acquired habit of consuming obesity and diabetes inducing food like wheat and rice. Okay. Now, this is again a shift. He's rebranded at Shriyan, which basically gives us an aspiration value. He's classified it as a superfood. Okay. He's not classified as a poor man's food. He's calling it a superfood. And it is a superfood because it has low glycemic content. Okay. Now, these are building blocks in my sense, So, the way that, till now we were approaching agriculture from a, infrastructure and sectoral point of view. Now we are approaching it from a slightly different view, which is produce, revamp the produce, create digital infrastructure, hence the focus on digital public goods there, which will enable marketplaces to form digitally. So, I think this is a fundamental shift. One last point. Yeah, please. On the infrastructure side, and which I saw in the budget document, Prime Minister Awas Yojana has now become the largest scheme. An allocation of almost 79,000 odd crores. Now, as you know, Prime Minister Awas Yojana has changed. It is not the government which builds the house. So it has a multiplier effect. It has a multiplier effect, and it is again demand linked. It's not investment linked. So the government gives you money to make your house. It doesn't say that, we'll build the house and you will come and stay here. You can build the house where you are. So, this is it's a subtle shift. For years we have depended on Manrega to generate jobs. Okay. But Prime Minister Awas Yojana, both for the rural sector and for the urban sector, will generate jobs in both these areas for, the lowest skill, which is the construction worker. So, I think these on top of that, there is a layer of, the whole capital expenditure. The private sector expenditure is lagging. We'll come to those aspects, Yatish. you've very in a nuanced way put out the building blocks which you're talking about, various sectors as well. And we'll come back to, infra and manufacturing and MSME. But Mr. Chandrajit Banerjee from CII is also with us. Mr. Banerjee, welcome to Sunset Television. Of course, we would like to understand how does the industry view, but apart from this budget, but apart from that, the key question here would be, does the industry see this as a move ahead, one more step ahead from the government, and how does the industry wants to match this pace? So I think you have put two sort of broad questions to me, and I would. The first one as to how industry sees this budget. Most of the things, or I feel that whatever we had asked for to be seen in the budget, we are seeing it.
We are seeing both consumption and investment demand coming up from this budget. We have seen fiscal prudence in the budget. We have seen a very strong focus on how we are able to make things simple. That type of a budget. We are seeing a budget which is visionary, which takes India to a developed economy 2047 over the budget for the Amrit Kal. So all of that is very well seen, and also newer areas of focus of ease of living, creating employment, focus on sustainable growth, focus on sustainability of cities, focus on rural economy, and focus even on R&D and technology. So all encompassing, it's a very, very strong budget. Now, where will the industry invest? And that's the question. You see, government has been very bold during the COVID time. Just before COVID, when industry was picking up, the growth rates was high. I'm talking from the point of view of industry capex and industry investment. That's the time when we were hit with COVID, and government was aggressive in capex spending, and they kept it on. And to see that thrust from the government is a phenomenal focus. And not only the central government, it is also encouraging the state governments to spend on capex. And if you see the economic survey of yesterday, we also see that there is credit offtake which has increased, say for instance in the MSME. Now all the credit offtake means some of it is going on to additional investment. So private sector investment expansion has begun, and this will only trigger further investment from the private sector through the tremendous capex focus the finance minister has kept on. So it is a growth-oriented budget. We see stronger growth coming over a period of time. Okay. You spoke about the focus on infra capex, and of course the resultant effect on manufacturing and MSME out there. But we'd also like to understand from you, how does the industry see in terms of the potential for investment or growth in other areas where the government is giving a lot of push? For example, in agriculture, in rural areas, when we talk about developing storage capacity, digital in agri, which the Prime Minister also mentioned about, and let's not forget the green aspect of the budget, focus on green energy and various other green issues which the budget focuses on. So, one of the things which has started happening over a period of time in the last few years is a way to see how government and industry can work together towards taking India to a more developed economy. Projects which will be done together. There is a private-public partnership of a kind that we are seeing, and therefore opportunities for the private sector to participate in areas of rural infrastructure, in terms of in the rural economy, especially through digital, where there can be much more of private sector intervention, technology which can be brought in. The scope of investments coming in for the upliftment of people. The digital story of India, say for instance, to say as to how it has actually touched the common man and given an inclusion. Included the private sector to help and to participate and invest are very, very important stories for which India's growth story is strong. So I see much more investments coming from the private sector into core areas, be it manufacturing or into other areas. There will be so much of opportunities in areas like drones, say for instance, and even in tech, in different tech areas. So I see this budget to be a budget where private sector investments could be pretty strong, and not only Indian private sector investment. I see India becoming a strong destination for foreign direct investments to come in. India is already a sweet spot, but through these making matters simple was something very important. We have seen focus on decriminalization. We have seen focus on ease of doing business. So all of this makes it a very attractive destination for Indian industry as well as for the global industry to be working here. Okay, indeed. So there are a lot of avenues, as you're pointing out, when we're talking about the application of technology in various sectors as well. Thank you so much, Mr. Banerjee. We also have with us Mr. Adil Shetty, who's joining us. He's the co-chair of FICCI FinTech Committee and also
the co-founder and CEO of bankbazaar.com. Mr. Shetty, when we're talking about application of technology, of course, in terms of fintech sector, what were the expectations, and where do you or the fintech industry analyzes various aspects of this budget? That's one part. But the other more important part, as I was asking Mr. Banerjee as well, the application of technology to newer areas, newer domains as well. Yeah, absolutely. We've been talking a lot about the 10 lakh crore capex push for physical infra. But if you notice, the FM spent about 5 minutes talking about digital public infra. And she emphasized, right, how UPI payments now are over 700 billion digital payment transactions in India per year. Here are the key aspects she touched upon. She spoke about simplified KYC, saying that Digital India needs a push. All financial regulators will look at simplified KYC. She spoke about DigiLocker, very unique global platform. 128 million Indians have a DigiLocker account. She said all document types will be integrated into DigiLocker for easy sharing. She said to ease credit, one-stop verification of address using DigiLocker and Aadhaar. And she spoke about 3 centers of excellence for artificial intelligence. I think the messaging is very clear. Digital public infra, digital development is an opportunity for India to leapfrog. If you look at yesterday's economic survey, what was said in it is that Indian GDP can rise by 1% if we are able to harness the benefits of digital public infrastructure. So big thrust on digital infra as they have given a thrust to physical infra. बिल्कुल हमारे साथ डॉक्टर महेश गुप्ता भी जुड़ गए हैं, सीएमडी हैं केंट आरो के। एक रिएक्शन बजट को लेकर उनसे भी लेते हैं। डॉक्टर गुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आप अपने नजरिए से बताइए, आपकी इंडस्ट्री को क्या मिला है भारत में कंजम्पशन के लिहाज से, और साथ ही जब हम एक्सपोर्ट को लेकर बात करते हैं, क्या हासिल हुआ है बजट में? बहुत अच्छा बजट आया है। इंडस्ट्री में देखें तो खासकर एमएसएमई को बहुत फायदा मिला है इस इंडस्ट्री के अंदर। एमएसएमई के अंदर एक लोन्स 2 लाख करोड़ के लोन्स एक्स्ट्रा एमएसएमई को मिलने वाले हैं। एमएसएमई में 3 लाख तक की टर्नओवर के ऊपर एक इनकम टैक्स के लिए आपको कोई अकाउंट्स रखने की जरूरत नहीं है। एमएसएमई को पैसे एकदम से मिलेंगे उनके लिए। अगर आपने एक बड़ी कंपनी ने अगर उनसे ट्रांजेक्शन किया, अगर पैसा उन्होंने नहीं दिया उस कंपनी का, तो उसको वो एक्सपेंस नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो एक एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है इस बजट से। जहां तक एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम लोगों का फॉरेन करेंसी के डिमांड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है। अभी इस वक्त इंटरनेशनल लेवल सिचुएशन खराब है। यूएस के अंदर हम लोग देख रहे हैं बहुत फायरिंग हो रही है लोगों की। यूरोप के अंदर अभी पोजीशन खराब है, गैस की पोजीशन की वजह से डिमांड कम है। तो मैं एक्सपोर्ट में तो कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं देख रहा हूं, बट इंडस्ट्री पॉजिटिवली हो रही है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डिमांड जनरेशन होगा इस बजट से। हर एक व्यक्ति को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला है इस बजट के अंदर से। इनकम टैक्स का एग्जम्पशन हो, चाहे हायर इनकम ग्रुप के लोगों का एग्जम्पशन हो, उनकी भी एक रेट ऑफ टैक्सेशन कम किया गया है। तो हर एक आदमी के हाथ में एग्रीकल्चर के अंदर पुश मिला है, और आपको आवास योजना में पैसा खर्च करने को मिलेगा। तो वो ये सारा पैसा जब लोगों के हाथ में आएगा तो डिमांड जनरेशन होगी, और डिमांड जनरेशन होगी तो इंडस्ट्री पूरी रिवाइव होती है और ग्रोथ स्टोरी उसकी बढ़ती है। आने वाले समय में मैं समझता हूं इससे जो हम लोगों का 7% का ग्रोथ है, ये धीरे धीरे बढ़ के बढ़ता ही चला जाएगा। ये सही इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। ओके। और आइए अब थोड़े से और रिएक्शन सुन लेते हैं। बजट के बाद क्या रिएक्शंस रहे हैं संसद भवन के अंदर, आइए सीधा आपको सुनाते हैं। I think about fiscal deficit and the GDP was very well and nicely placed by the Honourable Finance Minister. She did show up the plan step by step. We are very happy the middle class has got that support, which has always been spoken but not done. And this government showed it that they are here as with Saptarshi for every class, every caste and every gender. Oh, that's great for the common man. And I think that it's a historical move as well, and I'm sure I think people from a middle class will definitely benefit from this. It is helpful for the middle class and the poor section of our society. Look, some of those things are good. I'm not going to be completely negative, but I have still some questions. There was no mention of Manrega. What are we going to do about the poor rural labour? There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation.
So there are a number of questions still. There's some good things in the budget, I don't deny that. And I certainly found myself applauding when they created a new digital library for children around the country. I want to thank Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Nirmala Sitharaman ji for the massive announcement of the 5,000 crore rupees project for the Upper Bhadra irrigation project. From a very long time, many North Karnataka districts were struggling for even drinking water. This project is going to be a game changer. I thank the Honorable Prime Minister for this very important announcement on behalf of the people of Karnataka. Comprehensive, all-encompassing, from farmers to women entrepreneurs, to fishermen, to tribal, to digital, what not. An exemption to the middle class in a very big way, from rubber planters to sugarcane growers to cooperative to skilling. As I said, and above all, the exalted, respectable name given to Shri Anna, Ragi, Bajra, Jawar. That is the true vision of the Prime Minister. My greetings, respect to him. Sabka Saath, Sabka Vikas is what this budget speaks for. Definitely there's been a benefit for the taxpayer in general, right from the lower slabs onwards and even to the higher slabs. And every time we've seen this in the past, it's improved tax compliance. So I expect that in spite of the reduction in tax rates, that there will be increased compliance and therefore an increase in collections is what I expect. So there it is. You heard reactions from various members of the parliament on the budget presented by Finance Minister today. We also have with us, since most of the members were also speaking about, what the Finance Minister has done vis-a-vis the personal tax regime. We have with us Mr. Ambrish Saha, is partner Deloitte and tax expert as well. Mr. Saha, we would like to start with a very simple question. If you could explain to our viewers, what is it that they have got in the budget when we talk about the personal tax, direct tax rather? Yeah, so I think clearly, any income up to 15 lakh rupees, is something that individuals have benefited because of the lowering of the tax rate and the moving of the slabs. So if I were to look at a lower end, at 9 lakhs assume, I think there is a 15,000 rupees saving, and if I move right up to, the 15 lakh area, then the, tax saving moves up to almost 37,500 rupees. So every individual in that level up to 15 lakhs has got benefited from this. But I think the benefit will also go at the higher levels because the surcharge rate has been dropped significantly by 1/3 from 37.5 to 25. So income brackets above 5 crores or above 2 crores will also get benefit because of this surcharge rate drop. So I think it's at both ends of the spectrum from a personal tax perspective. But Mr. Saha, the key point here is that this is under the new tax regime. So is this also an indication that the government is making a subtle push towards the new tax regime as well? Because no such relief in the old tax regime. Absolutely. I think, when the new regime came, I think there was a gentle push. This makes it even more profound in terms of the push. And I hope that, with this, there will be more and more individuals who will move to the new regime because of the benefits that it will give. बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं फेज वाइज हटाने के लिए जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, कहीं ना कहीं न्यू टैक्स रिजीम को थोड़ा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं इसके अलावा अगर सैलरीड क्लास की बात कर रहे हैं और पेंशन भोगियों की बात करें हम अमरीश जी, तो इसके लिए न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन के लाभ को भी बढ़ाया गया है। सीनियर सिटीजन्स को कितना लाभ होगा इससे? सो आई थिंक इससे जो है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ गया है, तो उससे 52,500 तक उनको लेके गए हैं, जो न्यू रेजिम में जो पहले नहीं था। तो आई थिंक उसके ऊपर भी उनको अगर आप 15% भी एवरेज टैक्स रेट गिन लीजिए तो और 7,500 रुपया करीबन उनको लाभ मिल जाएगा। और जो इनकम टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 6 की गई है, इसका कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? सॉरी, वापस जरा ये, आई कुड नॉट हियर यू। जो स्लैब की संख्या है इनकम टैक्स में पहले 7 थी, जिसे अब कम करके 6 कर दिया